মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত, অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। बात कर रहे थे हम, वो ये कर रहे थे कि पावर में बने रहने का गुण हिमंता विश्व शर्मा को बहुत अच्छे से आता है। छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए तो उस समय मुख्यमंत्री के बड़े करीबी थे। एक समय उनको असम का सुपर सीएम कहा जाता था जिस वक्त असम में कांग्रेस की सरकार थी, और बाद में जब उनको लगा कि गड़बड़ हो रहा है तो बीजेपी में आ गए, यहाँ पर भी सुपर सीएम हो गए और अब सीएम हो गए दूसरी बार। बिल्कुल, दूसरी बात ये कि उन्हें ये पता था कि कांग्रेस के भीतर उनकी वो ग्रोथ नहीं हो सकती जो किसी दूसरी पार्टी में बीजेपी में जाके हो सकती है। कि कांग्रेस में उनको पता था कि गोगोई के बाद उनके बेटे आने हैं, गौरव गोगोई आए, और हमने देखा भी कि वो मुख्यमंत्री पद के एक तरह से डिफेक्टो उम्मीदवार बनाए भी गए, तो उन्हें इस बात की The ministers designate एहसास are था present.